Okay, students, today we will study about exponential distribution. So first of all, what is exponential distribution? A random variable, we can say a capital X, is said to have an exponential distribution with parameter lambda if its probability distribution function is defined by अभी हमारे पास जो exponential probability density function है जो हम यहाँ पे define कर रहे हैं, as you can see this one, f of x is equal to lambda into e raised to power minus lambda x in the interval from 0 to infinity, और यहाँ पे lambda जो है it is greater than 0 and this lambda is a parameter. The exponential distribution is one of the widely used continuous distribution. This is the type of continuous distribution. It is often used to model the time elapsed between events. ये हम use करते हैं किसी भी events के किसी भी event में जो time हमारे पास elapsed होता है, जो time गुजर चुका होता है किसी भी event के दरमियान में, उसके बारे में जब हमने कुछ discuss करना हो, कोई find करना हो probabilities को, then we will use exponential distribution. For example, if we say how much time will elapse before an earthquake occurs in a given region, कि कोई भी region है उसमें जो earthquake जो आया उससे पहले कितना time गुजर चुका था, this is the one example of this exponential distribution. Okay, as you can see here, the function f of x is equal to lambda into e raised to power minus lambda x. This is the function that we will use for exponential distribution. और जो यहाँ पे जो इसकी लिमिट है, लोअर लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो हम ये चेक कर सकते हैं दिस फंक्शन इज आल्सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एज वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट कि कोई भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कब होता है, जब हमारे पास किसी इंटरवल में जब उसको इंटीग्रेट करें और उसकी वैल्यू 1 आ जाए. सो वी कैन इजीली चेक, हमें यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं, check whether it is probability density function, means के this exponential distribution is a probability density function. के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 to infinity इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे. We can let this infinity इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं विद a, और इसके हम लिमिट ले लेते हैं a approaches to infinity, और देन क्या करेंगे, e raised to power minus lambda x is the inside the integral, lambda is constant, वो बाहर आ जाएगा as you can see here, and we know that the integral of e raised to power ax, अगर हमारे पास जो इंटीग्रल होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e raised to power ax dx के फॉर्म में, और this is equal to e raised to power ax divided by a, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है. But here in this case you can see e raised to power minus lambda x, so this is e raised to power minus lambda x divided by minus lambda, lambda से cancel हो जाएगा, then we can easily put the upper limit a and the lower limit 0, and after applying the limit we can see this is equal to 1. So this exponential distribution is also a probability density function, because when we check in the given interval it is equal to 1. Okay, after this, how can we find the mean and the variance for exponential distribution? The formula for mean is, as you can see here, जो भी हमारे पास फंक्शन है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद x, and we need to take the integral from 0 to infinity, ठीक है, and after simplification we can easily see, and applying the limits, the mean is equal to 1 over lambda. So keep it in your mind, the formula of mean in the case of exponential distribution is equal to 1 over lambda. And to find the variance, ठीक है, वेरिएंस के लिए क्या है, द सेम, यहाँ पे जो इसकी जो लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी, फंक्शन को देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स माइनस मीन स्क्वायर, क्लियर, माइनस मीन स्क्वायर मीन, आप मीन की जगह पे 0 टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स वो भी लिख सकते हैं, और उसका फिर स्क्वायर कर लें, और वी कैन आल्सो राइट दिस इज मीन स्क्वायर. सो दीज आर द टू फार्मूलाज टू फाइंड द मीन and the variance of the exponential distribution. So please note down these two formulas. Mean is equal to 1 over lambda and variance is equal to 0 to infinity x square f of x minus mean square. And function exponential function जो हमारे पास है
एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फंक्शन हम यूज करेंगे, आल्सो प्लीज नोट डाउन दिस फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा एक्स। और इसमें जो लैम्डा है दैट इज अ पैरामीटर, इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या होती है, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू विल अफेक्ट ऑन द ऑपरेशन ऑफ एनी फंक्शन, जो भी होता है ये हमारे पास वैल्यू जो है इसका पैरामीटर है। और इसके जो हम लिमिट यूज कर रहे हैं दैट इज 0 to infinity। One more thing you can also note it, if we integrate the exponential distribution function lambda into e raised to a minus lambda x dx in the interval a to b, this is very easy। lambda constant बाहर आ जाएगा, e raised to a minus lambda x का इंटीग्रल आएगा e raised to a minus lambda x over lambda, minus lambda वो कैंसिल होके, so this is the formula। हमारे पास जब हम इसकी लिमिट्स पुट कर देंगे तो e raised to power माइनस लैम्डा है माइनस e raised to power माइनस लैम्डा बी, दिस इज द इंटीग्रल। ये सिंप्लीफाई करना, दिस इज वेरी इजी। अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास इसका फार्मूला आएगा एंड वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी, दिस वन ऑन द राइट हैंड साइड। मे बी वी विल यूज such type of values in our questions। Now we have an exercise, we have a question, and what is the statement? Statement is, in March, the number of deaths per day by coronavirus in Pakistan is exponentially distributed by lambda is equal to 1 over 12. Now the parameter, the value of parameter is lambda is equal to 1 over 12। ठीक है, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ डेथ्स जो है पर डे कोरोना वायरस की वजह से जो पाकिस्तान में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन वो गिवन, उसकी लैम्डा की वैल्यू। व्हाट वी नीड टू फाइंड, फर्स्ट थिंग फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट in a specific day of March there are deaths। किसी भी खास स्पेसिफिक डे में जो डेथ्स होती हैं, जो फर्स्ट हमें फाइंड करना है बिटवीन 6 to 15 ए पार्ट में। बी पार्ट में फॉर स्पेसिफिक डे द डेथ्स आर ग्रेटर देन 8 वी नीड टू फाइंड। फॉर स्पेसिफिक डे द डेथ्स पर डे less than 5 we need to find these three things A, B and C। Now also in second part we need to find mean and variance। We also need to find mean and variance। So how can we find, this is very easy now। अभी हमने फंक्शन देखा, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन था, हम उसको यूज करेंगे। ओके, नाउ वी नो दैट लैम्डा इज इक्वल टू 1 over 12 इज गिवन। और फंक्शन हम जो यहाँ पे यूज करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटू ई रेस्ट पावर माइनस लैम्डा एक्स। ओके, हम इस फंक्शन को यूज करते हुए ए बी सी पार्ट और इसका जो सेकंड क्वेश्चन वो हम सॉल्व करेंगे। सो फॉर ए पार्ट वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। जो भी फंक्शन है हमारे पास उसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे। सो लैम्डा इज 1 over 12। हियर वी नो दैट इट इज गिवन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 over 12। तो जहाँ जहाँ पे ये फंक्शन में लैम्डा है वहाँ पे 1 over 12 पुट करेंगे एंड यू कैन सी वी नीड टू इंटीग्रेट from 6, the lower limit is 6, upper limit is 15, and when we integrate it 1 और 12 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ओके, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा एक्स, जो यहाँ पे माइनस लैम्डा की जगह पे 12 है, माइनस 1 और 12 एक्स आ जाएगा। इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e रेज़ टू पावर माइनस 1 और 12 एक्स डिवाइड बाय माइनस 1 और 12 आएगा, तो वो 12 से कैंसिल हो गया। आफ्टर दैट वी हैव दिस वन। नाउ वी नीड टू पुट द अपर एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट 15 पुट करेंगे एट द प्लेस ऑफ एक्स, minus lower limit 6 put करेंगे as you can see here, and after simplification the answer is 0.32। so this is uh, the probability for a specific day between 6 to 15। okay, now we need to find the second part। इसी तरह से हमें इसका जो बी पार्ट है उसको भी सॉल्व करना है। फॉर बी पार्ट इट इज़ ग्रेटर देन 8, इट्स मीन इफ इट इज़ ग्रेटर देन 8, सो इंटीग्रल जो हमारे पास यहाँ पे इस केस में होगा फॉर बी पार्ट वो क्या होगा, ए टू इन्फिनिटी। हमें इसको ए टू इन्फिनिटी में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फंक्शन वही रहेगा और लैम्डा की वैल्यू 1 और 12 होगी। सो यू कैन सी फॉर बी पार्ट ए टू इन्फिनिटी में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे द आंसर विल कम 0.32।
5134. And for C part, less than 5. It's mean if it is less than 5, तो मिनिमम जो डेथ पर डे वो 0 है, और 0 से लेके जो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जो इंटरवल अब हमारे पास फॉर सी पार्ट होगा, यू कैन सी इट इज 0 to 5 में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे इसी फंक्शन को। इंटीग्रेशन तो सेम है, जैसे हमें लिमिट्स को पुट करते हुए जब हम इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका आंसर जो आएगा वो 0.3408 आएगा। I hope you can understand about this now, how to find the probability by using exponential distribution. Similarly, हमें mean भी find करना था इसका, और इसका variance भी find करना है, and it is given that lambda is equal to, what is given, lambda is equal to 1/12. Okay, lambda is equal to 1/12. और इससे पहले मैंने ये अभी आपको बताया है the formula of mean. What is mean? Mean is equal to, mean की जो value थी वो क्या थी हमारे पास, in the previous slides I have shown you the value of mean, that is equal to 1/lambda. ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू 1/12, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 12, तो 12 के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली फॉर वेरिएंस, वेरिएंस का फार्मूला भी मैंने आपको बताया था, द फार्मूला ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू 1/lambda²। ठीक है, अभी हमने देखा द फार्मूला ऑफ वेरिएंस इज 1/lambda²। तो यहाँ पे भी आप पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू 1/12, 1/12 का स्क्वायर 1/44, बट इट इज 1/1/1/44, so this is equal to 1/44. So in this way we can easily find out the probabilities, mean and variance in this example. We have one more example, as you can see here, to understand about this exponential distribution. And in this example, what is given and what we need to find, you please read out by yourself the statement of this question, what we need to find and what is given. In this question you can see that in this question it is given that the duration of call, the duration of phone call received in the RAS help center is exponentially distributed by mean of 5 minutes. Now in this case, in this question, it is given that it is mean. Okay, the duration of phone call received by the RAS help center is exponentially distributed by mean of 5 minutes. Mean यहाँ पे हमें mean given है, the value of lambda is not given. So mean से हम lambda की value find out करेंगे, because in exponential distribution function we need the value of lambda to find the probabilities. Okay, find probability that a call is received of and call is received and duration of call is, हमें probability find करनी है कि कॉल रिसीव हुई है और उसका जो ड्यूरेशन है वो डिफरेंट गिवन है। फॉर एग्जांपल ए पार्ट द ड्यूरेशन इज 2 to 8 minutes, in B part the duration is less than 4 minutes, in C part it is greater than 10 minutes. Okay, it is given and we can also easily find the variance. mean तो given है, हम इसका variance भी find out कर सकते हैं। So you will see how can we find it and how to solve it, this question. As you can see, mean is given in this question. Mean is given, and what is mean? Mean is 5, and we know that the formula of mean is equal to 1/lambda. So in this case 1/lambda is equal to 5. ठीक है, 1/lambda is equal to 5, and जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे so the value of lambda is equal to 1/5. तो मीन से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब फंक्शन में पुट कर दें वैल्यू, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा इनटू ई रेज़्ड टू पावर माइनस लैम्डा एक्स। सो लैम्डा इज 1/5, ई रेज़्ड टू पावर minus 1/5x. So the A part, the duration of call is 2 to 8 minutes. तो 2 to 8 minutes में हम इसको, इसकी जो लोअर लिमिट 2 होगी, अपर लिमिट 8 होगी, उसमें जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे यू कैन सी इट इज इजी, ये 0.468 आ जाएगा। फॉर बी पार्ट लेस देन 4 मिनट्स, मीन के जो मिनिमम मिनट्स हो सकते हैं वो 0 और लेस देन 4 मिनट, 0 to 4 में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो 0 to 4 जब इसको इंटीग्रेट किया द आंसर विल कम्स आउट 0.5507, and to find greater than 10 minutes, so if it is greater than 10 minutes what we need to do, we need to integrate it. हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इसका जो इंटरवल होगा 10 to infinity, अब ग्रेटर देन
हमारे पास 10 मिनट्स हैं, वी डोंट नो हाउ मच लिमिट, इसको 10 टू इन्फिनिटी हम लेंगे। 10 टू इन्फिनिटी में जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, द आंसर विल कम्स आउट 0.1353। सो इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड व्हेन द मीन इज गिवन। इस क्वेश्चन में देखेंगे हमें लैम्डा नहीं था गिवन, just mean is given. Similarly, maybe in some question variance is given, we can easily find the value of lambda. It's depend on the question को question किस type का है और क्या given है conditions. Okay. After this, there is a two questions for you, one question for you, and in this question, this is exercise question to know and learn about more exponential distribution. I will explain the question and you need to solve by yourself. In this question, the betting score of a player Shahid Afridi in PSL is exponentially distributed with mean of 16 runs. यहाँ पे भी mean given, it's mean कि ये हमें mean given है, we can easily find the lambda. Find क्या करना है? Find the probability that against Lahore Qalandar he scores how many scores? A part between 20 to 30 runs, B part में less than 10 runs, ठीक है, और C part में greater than 20 runs. So we know we have already solved two examples. Similarly, we can also solve this question. I hope when you will solve this question, you will learn and know more about this exponential distribution.